इस बार के अतिथि सुदूर पूर्वोत्तर के मेघालय से जुड़ रहे हैं, जो हैं नंदराव बी मारक। बहुत ही खास तरह की उन्नत खेती शैली के लिए इनको हाल में ही पद्मश्री अवार्ड दिया गया है। न केवल पद्मश्री अवार्ड बल्कि इंटरनेशनल स्तर के कई सारे सम्मान और अवार्ड इनको दिए गए हैं। और साथ साथ मैं बताते चलूँ दर्शकों कि इन्होंने 3400 प्रकार की ब्लैक पेपर की खेती की है और उस तरह की प्लांटेशन किया है। साथ साथ इन्होंने एरिका नट प्लांटेशन में भी अपना काफ़ी योगदान दिया है। छोटे से गांव से आते हैं, खेती बाड़ी करते हैं और बहुत ही उन्नत किस्म की जो ब्लैक पेपर्स हैं उस पर इनका काम है कि ये अवार्ड मिलेगा। कभी सोचा था? ना मैं लेकिन का अवार्ड इंटरनेशनल अवार्ड मानने जमन पद्मश्री अवार्ड मानने जमन मैं लेकिन का था को खुशी होंगे जना no international award or पद्मश्री award ko mai jab na blon bisunga arong ko yana pakti teng chik pat ka bakham kana na ani na angko ya mataniara na ben kisko na makyer dj ni konsumta So now you translate. Yeah, I am very happy after getting the international award, after getting the Padma award. So these awards and government encouraging to work hard future also. Oh, that's great. Very good. तो ये कह रहे थे कि इनको सम्मान पाकर बहुत खुशी हुई है। बस सवाल एक सबसे इम्पोर्टेंट सर है कि चूंकि मेघालय एक ऐसा प्रांत है विच इज सराउंडेड बाय लश ग्रीन ऑलरेडी, बहुत सारी चीज़ों की खेती होती है और देयर आर वैरायटी ऑफ ट्रीज आर देयर। Why black pepper only? I mean, how this idea come into your mind? I mean, for the farming of black pepper, why it is and how it is, how it's all of a sudden come into your mind? Na black pepper ko san giya ya manis giya na ko kitna ko giya ko kan bo de wira ko giya black pepper giya na na de me pera ko giya ko fira ko giya na kan bo de ya plot ki chana na giya na bo de upload ki sano baka kapana ko bagi chapan yang dongwa aga gui ya black gulmor se giya aro rubber giya aro anaros ko ba bibang hajar bima kata giya aro kopi giya aro holdirang ko mga giya. Can you translate? Yeah. He planted not only black pepper, he planted erica nut. After that, he set the jungle trees, and after that he planted the black pepper. And another he planted coffee also. He planted 4,000 pineapple, and it's all different varieties. Different varieties. Like but how his work is special? I mean, how it is different from others farmer? I mean, why government has chosen for your work, like for award or kind of thing is how your work is different. Government aku masih cakap, mereka yang European artis sama aku tentang macam promote kahani government akan tak apa gada mana sokah, biku ya ko ham kai ba promote kai ulah ni namen betul lah. I don't know the government. Government did not know my plantation, but RK Sama, he promoted to international and Padma award. Oh, that's great. That's very nice. But another question is, sir, since you belong to a very small village, right? What's the name of your village? Nani songko chunga ba song ba nani songko memna? Angni songko chunga ba song gesong ba kondagri bunga, kan tikikla block ni underwa. My village under Tikigla block and my village name is Kondagri. Okay, Kondagri. So मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या इस तरह की खेती से आपके गांव के लोग जुड़ पाए हैं, उनको रोजगार मिला है? आपकी जो खेती हो रही है, खास तरह की जो आपने शैली अपनाई है खेती की, क्या इससे लोगों को, गांव के लोगों को रोजगार मिल रहा है? Whether they are getting any employment, is your work is generating any employment to the villagers? Ani komorso giani gui giani aro kapana ko sa panlawa sa kapana ko namen tak sakla kata binga maina basa ko bade anga wa makla adita pipana ko isong na natin bana ki zangi zakar pana kata nga bisuna adita pro supply kana kata man azok arwa sang wa giza ndiga thaka pasana kata ba nga bisuna adita ubos tali clean iroking bana bisong ko ba tak sakla kata man painga. Translated. Not for myself only. Whatever I am getting money from plantation, helping the neighbors, those who are working in my estate plantation,
And sometimes I'm giving the seed nursery also to plant at some other places. I'm encouraging to plant them. Farming. Yeah. Okay, so what is the traditional farming in your village, in your district? anga gurang ki chingis khan anga burugna ko abo we bana rong thara tane ko dak chenga ni zaman sa bora ku roka aro kuera ko kia zaman ko morsko ki bichera ko nagata aro wande ke thang cha gurang ya dita jela hani gaman anga sa kapna na bu ko suari ming bana bisang ko bagan khat phana kata man paha yan mangsa angni bul ko khregi zakhadan yara sakapna na bana bini ko hanya man na kata man My traditional plan is I first clear the jungle. Then Deforestation. Deforestation. After that, I planted arecanut, and after that, I planted black pepper nursery. Okay. Then, whatever the nursery exists, I am giving to my laborers to increase in area black pepper. That's great. Very good. Yeah. दर्शकों मैं बताती चलूँ मेघालय से हैं नंदराव जी। काफ़ी छोटा सा गांव है लेकिन बहुत ही यूनिक और बहुत ही अनूठे किस्म की जो खेती है, कृषि है, वो ये कर रहे हैं। बहुत अच्छा लगता है जब एक छोटे से गांव का किसान बहुत ही एक्सपेरिमेंटल तरीके से खेती करता है, बिल्कुल ट्रेडिशनल खेती से अलग, पारंपरिक खेती से अलग। नंदराव जी, आप कैन यू टेल समथिंग अबाउट योर चाइल्डहुड? कहाँ, किस तरह की फैमिली में आप पैदा हुए? हाउ वाज योर फैमिली स्टेटस? वेयर यू स्टडीज? angni poreni gadrang dongpaja na class 10 ko machot na kata matzo ibiti bong ko ma gami si cha na ngawna sokpa na ka angni mande baksa noktang ko pajok ya kali zamano de wan didra na ko da de pet singa mat bana ha didra sakka tamsan do ya bo mo ko porayat ha singa noktang na ki bana de ki jangit na kata mana ha ro mo ko porayat adita kadara ho sokpa ta ha ro lagi bana bagan berjangce palis ni lematang aldu bana anga gomako poraytani kada ro supatan baksana ba nokko berna kata mana aro lagi angi mandiba longen kham khana bukpa saksa nokani makabok ma aruan lagi uni kham ka jirang mairungke anga noktam ko singa tani una bia namen khege kham ka chumota ha nyanga bibera aruni kham ka ni bithera gara tawon kata mana adita thangka paisa ko maninga aru gari ra ko bida kata maninga aru lokko bar na kata mana aru didra ko ba nagen na tuai project na kata mana baksana ba punang na ba tuai banga raksa ra ko na kata man pahan yang dia sumli ba ko angni plak noktani khamra ko pangchaki agana kata ni agana ni ra era kon da ken agana thara ta kata namben isimbi My education is class 10. I studied in village school, and I have a family. I have three children, one daughter and two sons. They have education. They have completed, and one son is working in the school, and one son is went to study BD, and daughter is housewife. Oh. And how was his life? Like whether it's struggling life or struggling life. And he is telling his wife is very hard work. Oh, good. And she help him whatever project is there. Always is hard working. That's why he and she getting more money. Oh, great. That money, they build their residential house, and they have purchased for use car also, and they spend some money for children's education. He is telling. That's great. Very good, sir. Can you tell me, sir, what is the entire process of this farming? Like, first you grow, produce the things, and then you go to the market. I mean, what is the chain? Complete processing is what? Like, are you connected with some dealers, or you sold them the product, or are they come to to your village to collect the produce? How is the whole process? Matela madam, nevna wajen salo adita baganang nani gaman aro ngani gaman akna bangani gaman angar warang kora natna bata mancha process kana bata mancha umna
gatang ko nanga falata na ka ka aro bangpata brina di ba ko parang dungwali ka mananga wa mangan aking bana gatang ko falat na kata ngaya ro taken phana namnu patahan yang ajin ki berakon rata Greek proses ka gri amade falat lisensen falata. I am selling raw. Today I will harvest the black pepper. Evening time, the purchasers are coming to purchase. So it is easy. So I don't still now I do not processing my black pepper. It is easy to me. So it is quantity is very big. So I cannot process it. So now this year also the raw one per kg 150 is selling. बातचीत कर रहे हैं मेघालय के बहुत छोटे से गांव से आने वाले एक बहुत ही अद्भुत किसान से। बहुत मृदुभाषी हैं, आपके सामने बैठे हैं और बड़ी बेबाकी से अपनी खेती बाड़ी की चर्चा कर रहे हैं। पद्मश्री मिला है इनको अभी हाल में ही, और हम उसी पे लगातार चर्चा कर रहे हैं कि किस तरह से इन्होंने ब्लैक पेपर की खेती की और बिना किसी मदद के आज इन्होंने 3400 या 3500 किस्म की ब्लैक पेपर की जो किस्में हैं उसको आगे उस पर काम कर रहे हैं और लगातार लोगों को रोज़गार से भी जोड़ रहे हैं। कितना अद्भुत लगता है कैसे देश में जहाँ पे कोई भी सहायता नहीं हो फिर भी किसान अपनी मेहनत से, अपने बूते से, अपने श्रम से आगे बढ़ता है और लगातार शीर्ष तक पहुँचता है।